हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 13 एनसीईआरटी मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिनिश कर लिया है। और आज हम लोग मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आपको इस चैप्टर में किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर 13 मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से के एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन डील करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल एंड electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि मैं इस तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे बैक साइड एक वॉल है और मेरे फ्रंट साइड भी एक वॉल है। एक इलेक्ट्रॉन का बीम मेरे बैक साइड से फ्रंट साइड की ओर मूव कर रहा है, यानी बैक वॉल से फ्रंट वॉल की ओर मूव कर रहा है। इस मूविंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग electron. Then student, what will be the direction of the current? We know that the direction of current is opposite to the direction of the motion of electron. It means the direction of current will be from the front wall to the back wall. अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, then the direction of current will be opposite to the direction of the electron. So if the electron is moving from the back wall to the front wall, then the direction of current will be from the front wall to the back wall. Now this electron is deflected towards the right side. It means this is my right, then this moving electron is deflected towards the right side. Then we have to find the direction of magnetic field which has deflected the direction of electron. We know that we can find the direction of magnetic field by using Fleming's left hand rule. Student, as the direction of current is from the front wall to the back wall, it means the middle finger will indicate the direction of what? Current. So I will place my middle finger in the front to back wall direction, and this thumb will indicate the direction of electron, the direction of deflection of electron. And according to question, the deflection of electron is from the right side. So I have placed the direction of middle finger in the backward direction, in the direction of current. Thumb is indicating towards the right, which is the deflection of electron. Then my forefinger is pointing downward. It means the direction of magnetic field is in the downward direction.
Try it in this diagram. This is back wall, and this is front wall. This is the direction of electron. So this would be the direction of current opposite to the direction of electron. By applying the magnetic Fleming's left hand rule, the direction of the magnetic field is in the downward direction. तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है सेम एक्सरसाइज का। Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current will be induced in coil B? Give reason. Student, according to the question, there is two coils A and B. This is coil A and the another coil is close to coil A, that is B. Student, if we change the amount of electric current in the coil A, then what will happen? Is there any induced current in B or not? To detect it, we have connected a galvanometer here so that we can find the induced current in the coil B. As the current in the coil A is changed, therefore the magnetic field produced by coil A or the magnetic field associated with the coil A is also changes, because if there is change in the current, there will also change in the amount of the magnetic field. And whenever there is change in magnetic field, the electric current is induced in the coil, and this coil B is in the magnetic field produced by A, and the magnetic field of coil A it changes. That's why there will be some induced current in coil B, because there is change in the magnetic field of the coil A. So the answer of this question is yes, there will be induced current in the coil B, and the reason is because if we change the amount of current flowing in the coil A, the magnetic field associated with the coil A is also changed, and whenever there is change in the magnetic field, then there is a current induced because of the change in the magnetic field. So student, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।